नमस्कार मैं आपको स्वागत करुच्ची अड्डा 24/7 ओपीएससी चैनल रे थंबनेल रो आपण माने देखुतबे आज रो सेशन रे हमें बेस्ट 100 एमसीक्यूज डिस्कस करबा 100 एमसीक्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स ठीक अछि चलन तो स्टार्ट करबा आज रो सेशन If you want to live a happy life tied to a goal, not to people or things, जदि आपण happily बंचिबा पई चाहउछन्ती happily खुशी रे रहिबा पई चाहउछन्ती जोटा एक्जेक्टली कोहा जे देन आपण को जीवन सहित गोटे गोल सहित अटैच करंतु गोल को टाई ऑफ करंतु गोल सहित टाई ऑफ जदि करिवे डेफिनेटली आपण जीवन रे खुशी रही परिबे जय जगन्नाथ लकी नमस्कार ज्योति प्रकाश ये जो मोर टेलीग्राम चैनल आपण कंटेंट मटेरियल पाई फ्री कंटेंट मटेरियल पीडीएफ पाई आपण स्कैन करके जॉइन करि परिबे ये जो मोर इंस्टाग्राम अपडेट्स ये सब जिनस पाई आपण मते कनेक्ट करि परिबे टुडेज एजेंडा कोन रहइबो इकोनॉमिक्स बेस्ट 100 एमसीक्यूज डिस्कस करिबा ऑब्वियसली 1 आवर प्लस टाइम लागिबो नेक्स्ट चलन तो डिस्कस करिबा फर्स्ट क्वेश्चन आपण स्क्रीन रे जो मैंने ऑनलाइन अच्छी से मैंने डेफिनेटली आंसर करेंगे ठीक अच्छे कारण एग्जाम बेसी समय नहीं हम पाखे with reference to Indian budget system consider the following statement the first budget in India was formally introduced in 1909 the first budget in India was formally introduced in 1909 the word budget is not mentioned in the Constitution of India the Department of Revenue under the Union Ministry of Finance is responsible for preparing the union budget. Third statement to start करिबा correct answer find out करिबा पे देछि third statement to start जदी करूचे third रे से कोन कहूची Department of Revenue it's not Department of Revenue rather Department of Economic Affairs ठीक अछि Department of Economic Affairs तो obviously इटा को आपण एलिमिनेट करि परिबे सेकंड जे कोन जे तो कोन कहूची द वर्ड बजेट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेफिनेटली मेंशन है नाही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे द वर्ड बजेट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बजेट शब्द न हे कि सेठी कोन मेंशन अछि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक अछि द फर्स्ट बजेट इन इंडिया वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन 1909 ठीक अच्छे तो आंसर कौन हम आंसर कौन हम कहतु जो फॉर्मली इंट्रोड्यूस करा जायथिला बजेट को देखंतु एठी बजेट इन इंडिया अछि फर्स्ट बजेट अछि जदि आपण देखिबे आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली 1947 रे हितल जदि आपण देखिबे प्रथम थर पई केबे इंट्रोड्यूस हेतला सेटा थला 1860 ठीक अछि प्रथम थर पई जेबे इंट्रोड्यूस हेतला 1860 एवं आफ्टर इंडिपेंडेंस जदि देखिबे 1947 तो से हिसाब रे दुईटी जाक केस रे ये होची रॉन्ग स्टेटमेंट तनु रॉन्ग स्टेटमेंट जदि आपण कहि परिबे द फर्स्ट बजेट इन इंडिया वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन 1909 से कहूची तो आंसर कोन हबो नन ऑफ द अबव डेफिनेटली आंसर नन ऑफ द अबव कारण इंडिपेंडेंस पर 1947 हला तापरे जदि बिफोर इंडिपेंडेंस देखिबे तबे ब्रिटिश टाइम रे 1860 रे प्रथम थर पे बजेट को इंट्रोड्यूस करा जायतिला ठीक अछि तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखियो कंसीडर द फॉलोइंग एक्शंस
privatization of loss-making public sector enterprises, reducing import of defense item, reducing subsidies on fuel, and zero-based budgeting. How many of the above actions can help in reduction of government expenditure? Reduction in government expenditure रे को components गुड़ी को हमको help करे. ठीक अछि. देखो तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ लॉस मेकिंग जदि आमे करिबा जंती एयर इंडिया रो एग्जांपल आपण नै परिबे. एयर इंडिया लॉस मेकिंग थिला आमे ताको प्राइवेटाइज कर देले, टाटा को बिकी देले. सो इन दैट केस पब्लिक एक्सपेंडिचर जो टैक्स पेयर्स मनी या एक्सचेकर्स रु जो पैसा जाउथला दैट विल बी सेव्ड. सेकंड, इंपोर्ट ऑफ डिफेंस आइटम. तो ऑब्वियसली इंपोर्ट ऑफ डिफेंस आइटम जदि करिबे डेफिनेटली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कोन हो कम रहिबो. नेक्स्ट, reducing subsidies on fuel. Subsidies भी revenue expenditure रो part. Subsidies कहाँ रो part? Revenue expenditure रो part. तो definitely revenue expenditure भी कम होगा. And then zero based budgeting. Zero based budgeting. Zero based budgeting माने कौन? ना जितबले budget आमे introduce करिबा या budget जितबले plan करिबा zero रू start करिबा. Zero in the sense की ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ସେଥିରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ କିଛି ଯେମିତି ନ ରହିବ, କଷ୍ଟ ଯେମିତି କିଛି ରହିବ, ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ କିଛି ଯେମିତି ନ ରହିବ. ତ ଡେଫିନେଟଲି ଅଲ୍ ଫୋର୍ ଆର୍ ଦ measures जोटा कि will help in reducing the government expenditure. So answer होउची कोन? Answer होउची D. All four are the correct answer. ठीक अछि. Next देखिबा. With reference to public goods, consider the following. Public goods. An effluent treatment plant installed the government. An effluent treatment plant installed by the government. Second, woolen clothes distributed by municipal corporation to poor people living in shelter homes. Food grains offered at ration shop. Defense forces deployed to protect the boundary of a nation. Establishment of public parks in urban areas. How many of above are examples of public goods? Answer करिए बेटा. Answer करिए. देखो पब्लिक गुड्स माने कौन? इधर गवर्नमेंट द्वारा सेटा को मैन्युफैक्चर करा जाइथिबो, इधर गवर्नमेंट द्वारा सेटा को मैन्युफैक्चर करा जाइथिबो. ओके. देखो तो जीरो बेस्ड बजेटिंग माने कौन? जीरो बेस्ड बजेटिंग माने होची जेते भी एक्सपेंसेस गुडी को अछि से गुडी को आपन को जस्टिफाई करिबा को पड़ियो. जस्टिफाई करिबा को, जस्टिफाई इन द सेंस कि सपोज बहुत गुडे स्कीम्स गुडी को आपन देखिबे लास्ट ईयर एतिकी खर्च हेतिला, ए वर्ष हम एतिकी खर्च करियो, राइट? बट जीरो बेस्ड बजेटिंग रे कोन हो? यानी कि आपण सिंपली जो बजेट लास्ट ईयर एलोकेट हेतला लेट्स से 50,000 crore सेथरे आपण ओटे ऐड कर देले नेक्स्ट 60,000 crores लेट्स से. बट जीरो बेस्ड बजेटिंग होची ये 50,000 crore जो खर्च हेतला तार जस्टिफिकेशन आपण देबे प्लस ए वर्ष आकु सप्लीमेंट न करिकी आपण नुआ करिकी बजेट रिलीज करिवे. डिपेंड्स ऑन इट्स परफॉर्मेंस. जीरो बेस्ड बजेटिंग डिपेंड्स ऑन इट्स परफॉर्मेंस. तेणु से केस रे एक्सपेंडिचर को आपण राशनलाइज करि परिबे. एक्सपेंडिचर को आपण राशनलाइज करि परिबे. ठीक अछि. नेक्स्ट देखिबा. एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट से कहूची woolen clothes distributed by municipal corporation to people living in shelter homes. Food grains offered at ration shop. Defense forces deployed to protect the boundary of a nation and establishment of public parks. तो 4 and 5 रे कोनोसी डाउट नहीं कहार भी. डिफेंस फोर्सेस जो गुडी को अछि
जेमती कहली मु एक तो गवर्नमेंट या प्राइवेट पार्टीज द्वारा सेटा को बिल्ड करा जाए, क्रिएट करा जाए एवं गवर्नमेंट को ट्रांसफर करा जाए। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एटा सबुठो इंपोर्टेंट फीचर मन रखथिबे। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी यार माने कोन, माने होची जणे कंज्यूम जदि करिवो आर जण भी कंज्यूम करि परिबो, एक्सक्लूजन हेई पर हबो नाही। एंड नॉन राइवलरस, नॉन राइवलरस जेमती सपोज मूवी टिकेट, आपण जदि मूवी टिकेट परचेस करूछन आपण निजे ही मूवी को एंजॉय करि परिबे, ठीक अछि। ता माने आपण ही एकुटिया जाई परिबे, दैट इज एक्सक्लूडेबिलिटी एंड राइवलरी इन नेचर। बट ये होची नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन राइवलरी नेचर। से हिसाब रे देखिबा को गले डिफेंस फोर्सेस कंप्लीटली होल कंट्री को प्रोटेक्ट करिवो। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक पार्क्स इन अर्बन एरिया जे चाहिबो से एक्सेस करि परिवो। फूड ग्रेन्स ऑफर्ड एट द राशन शॉप, ये होची पीडीएस सिस्टम। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अछि, समस्त को पई एक्सेस नुहे। वुलन क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, अगेन स्पेसिफिक पीपल जो मानकर पाखरे शेल्टर नाही, माने होम नाही फॉर द शेल्टर, से माने पब्लिक शेल्टर रे नौछंती आश्रय। जेमती आपण देखिबे होमलेस पीपल मानकू विंटर समय रे से मानकू शेल्टर रे रखा जाए। इज इट फाइन नाउ? एवे ठीक अच्छी साउंड प्लीज कहिबे। एंड थर्ड वन इज एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल बाय द गवर्नमेंट। तो ये ट्रीटमेंट प्लांट रे सबु समस्तंगर एक्सेस या समस्त तार बेनिफिट लाभ पाई परिबे, राइट। सो दिस इज द अनदर वन। सो 1, 4 and 5, 3 are known as the आपण कहि परिबे पब्लिक गुड्स रो एग्जांपल। सो आंसर इज आपणकर बी, ओनली 3। रिफ्यूजी कैंप नुहे, रिफ्यूजी कैंप होची जो माने रिफ्यूजी जो माने देश छाड़ी की पळे आसंती एठी शेल्टर नै छै। मु कहूची होमलेस जो माने खास करके विंटर समय रे से माननको टेम्पररी आश्रय स्थल दिया जाए। नेक्स्ट, द term financial contagion appeared in economic survey 22-23 in the given context. Which of the following statement best describes the term? ठीक अछि, financial contagion appeared in the economic survey 22-23 in the given context. Which of the following statement best describes? तो आपण देखंतु ABCD, डी ऑप्शन को थोड़ा देखंतु। डी ऑप्शन कोन कहूची, it is the spread of financial instability from one market or country to another. So financial contagion, contagious disease जोटा हमें कहू ना, infectious, contagious, spread हुए जोटा। तेणु financial contagious माने financial instability जेतेबेले सपोज जेमती कहा जाए when America sneezes, India catches cold, or एवरी वर्ल्ड इकोनॉमी कैचेस कोल्ड। ता माने कौन, गोटिए कंट्री रे जदि क्राइसिस स्टार्ट हुए दैट विल स्प्रेड टू अदर कंट्रीज एज वेल। तेणु सेटा को फाइनेंशियल कंटाजियन बोली कहा जाउची। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक अछि, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ ए कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक by the government, then A, the opportunity cost is 0, B, the opportunity cost is ignored, C, the opportunity cost is transferred from the consumers to the product to the tax paying public, the opportunity cost is transferred from the consumers of the product to the government. So answer कौन हो? गोटे प्रोडक्ट को फ्री रे प्रोवाइड करा जाउची। फ्री रे इन द सेंस कि सपोज आपण गवर्नमेंट कौन कला, फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट कला। गवर्नमेंट कौन कला, फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट कला स्टूडेंट्स मानक। ठीक अछि, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर टू द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। ता माने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन ना, सबु प्रोडक्ट रो गोटे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थाए। ता माने से जति की पैसा खर्च करा जाइथिबो लैपटॉप रे, दैट कुड बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस।
that could be used for other purposes. Let's say सेटा को यूज करिकी से माने स्कूल्स डेवलप करि पारि थांते, कॉलेज डेवलप करि पारि थांते, हॉस्पिटल्स डेवलप करि पारि थांते। तेबे से काहा पैसा रे एटा को दिया गला? ऑब्वियसली गवर्नमेंट कोठु पैसा आणुची? टैक्स पेयर। ता माने गोटे प्रोडक्ट को जतबेले गवर्नमेंट पे करूची तार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोठु आसुची? ता अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आसुची टैक्स पेयर्स मनी रो। तार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोठु आसुची? टैक्स पेयर्स रो मनी रो। तो सेति पई को आ जाउची द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक, बिकॉज people are paying tax and in that tax money government is spending। जेमती एबे गोटे जो पिलाटे वायरल हिचे आपण देखिबे जो कथावाचक जो चली छि तर नाटक अरोरा तर नाटक बर्तन तक पुलिस प्रोटेक्शन दिया गला, तो ताको बर्तन ट्रोल करा जाउची कि टैक्स पेयर्स मनी रे ताको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाउची बोली। तो ऑब्वियसली व्हाट एवर गवर्नमेंट इज डूइंग द सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर द पॉलिटिशियंस, राइट? तो से पैसा कोठु आसुची? स्पेंडिंग like crores of money in our country for the protection of these politicians or netas and dadas and didis। तो ए जो जिनसे गुड़ा से कोठु आसुची? टैक्स पेयर मनी रो आसुची। सो ऑब्वियसली टैक्स पेइंग पब्लिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काहा ऊपर लाई करूची? टैक्स पेयर्स को ऊपर। ठीक अछि, आंसर होची आपनकर सी। एटा को मन रखतबे, यूपीएससी रे क्वेश्चन टे आस्थला। नेक्स्ट, with reference to the difference between public provision and public production of goods, consider the following statements. Public provision and public production of goods, consider the following statements. First kochi, in public production the government directly produces goods, whereas public provision the government finances through the budget for the production of goods. Second, all goods in public production are non-rivalrous, whereas some goods within public provisions are rivalrous। ठीक अछि, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट अछि। यार आंसर कोन हो? पब्लिक गुड्स हमें ऑलरेडी मु आपन को बुझै छी, एक्सप्लेन करि छी, तो प्लीज आंसर करंतु। यार आंसर कोन हो? देखंतु फर्स्ट स्टेटमेंट से कोन कहूची? प्रथम एटा देखन, पब्लिक प्रोविजन and public production of goods। public production of goods माने simply आपण कोइ परबे जोटा कि directly produced by the government। public provision in the sense कि जोटा कि सरकार subsidize दउची किंबा सरकार incentive दउची produce करिवा पई। ठीक अछि, फर्स्ट स्टेटमेंट से कहूची in public production the government directly produces goods, whereas public provision the government finances through the budget for the production of goods। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होची आपनकर absolutely correct, कारण पब्लिक प्रोडक्शन माने सरकार निजे सेटा को प्रोड्यूस करूची, प्रोविजन जो जगह रे सरकार सब्सिडीज दउची, इंसेंटिव दउची, सो दैट लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। सेकंड स्टेटमेंट देखंतु, ऑल गुड्स इन पब्लिक प्रोडक्शन आर नॉन राइवलरस। ता माने सरकार जहां भी प्रोड्यूस करूची आपन को लागुची दैट इज नॉन राइवलरस। सरकार जहां भी प्रोड्यूस करूचंदी, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूचंदी सबु गुडी को वेलफेयर पर्पस से प्रोड्यूस करूचंदी एवं सबु गुडी को नॉन राइवलरस। सपोज सरकारंकर जो पीएसयूज कंपनी गुडी को अछि, सरकारंकर पीएसयूज कंपनीज गुडी को अछि, तनु जहां भी से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूचंदी कि सबु गुडी को कोन हम डिस्ट्रीब्यूट करूचु फ्रीली? नो। तनु ऑल गुड्स जेहेतु देइची, तनु ऑब्वियसली एठी गोटे डाउट आपनक मन रे आसीबा स्वाभाविक। इट्स ऑब्वियस you should think of all goods तो केबे हेई नथिबो, तनु सिंपली एटा को आपण रॉन्ग से केस रो आपण करि परिबे। ठीक अछि, सम गुड्स विद इन पब्लिक प्रोविजन आर राइवलरस। ये पार्टीज ठीक हेई पारे कि सरकार गोटे प्राइवेट इंस्टीट्यूट को या प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस को सब्सिडीज देई पारंती कि ठीक अछि किछि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पई तो प्रोड्यूस कर, किछि तो मार्केट पई प्रोड्यूस कर। सम आर राइवलरस, सम आर नॉन राइवलरस, बट ऑल गुड्स इन पब्लिक प्रोडक्शन आर राइवलरस या नॉन राइवलर से कहूची? तो ऑब्वियसली नो। तेणु सेकंड स्टेटमेंट को आपण इजिली एलिमिनेट करिकी फर्स्ट स्टेटमेंट को आपण आंसर करि परिबे। सो आंसर इज ए वन ओनली। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हमें। कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स: fair distribution of income in the society,
fair distribution of income in the society. Second is to provide certain goods and services to the public which cannot be provided by the market mechanism to achieve certain levels of economic growth in the country. How many of above are objectives of the government budget in a country? Government budget रो objectives गुड़िका कौन से जिनसों को हमें discuss करिबा. budget जो financial statement विषय हमें discuss करू जो प्रति वर्ष सरकार नहीं क्या सोचने. तो सरकार का budget रो main purpose कौन? Fair distribution. Obviously fair distribution in the sense कि किसी अपन देखिए जो revenue receipt रोची tax and non tax, right? Tax and non tax. तो definitely fair distribution पाई objective तारा to provide certain goods and services to the public which cannot be provided by the market mechanism. जो subsidized goods गुड़ को दिया जाऊँची PDS माध्यम रे fair price shop माध्यम रे जो products गुड़ को दिया जाऊँची तारा main motive कौन? motive होची market mechanism जो जगह रे देखो तो इटे को मन रखता ना ठीक है बुझिया पे चेष्टा करिवे. Why public goods? Why public goods? Because market mechanism fails. Because market mechanism fails. What is this public goods? ना जो गुड़ी को हमें डिस्कस करी थिले कि सरकार प्रोवाइड करूचंदी generally for the welfare of the people without like discriminating. सरकार जो गुड़ी को प्रोवाइड करूचंदी जिंदी पब्लिक पार्क्स गुड़ी को हो. पब्लिक पार्क्स होची वेलफेयर पाई. आपण फिजिकल एक्सरसाइज करिवे आपणकर जो क्लीन एयर आपण पई दरकार आपण सेठी जाई कि जंती कहली एक्सरसाइज करि परिबे मॉर्निंग वॉक करि परिबे. इ सब जिंस प्राइवेट काहे की करिवो. इफ प्राइवेट विल डू डेफिनेटली प्राइवेट विल चार्ज. जंती भुवनेश्वर निको पार्क आई थिंक मु 10-12 वर्ष तळर कथा कहूची 40 टंका ना कोन एंट्री फी थिला एबे केते टंका थियो मु जाननी किंतु निको पार्क इज समथिंग व्हाट प्राइवेट दे विल चार्ज मनी. तो से केस रे पब्लिक गुड्स रा आवश्यकता अछि बिकॉज मार्केट फेल्स. मार्केट कैन नॉट प्रोवाइड प्रोडक्ट्स फ्रीली और they will not think of profit, they will not think of this thing welfare motive. They will always think of what? Profit motive. तो से केस रे मार्केट फेल्स तेणु पब्लिक गुड्स से प्रोडक्ट गुड़िक गवर्नमेंट द्वारा प्रोड्यूस करा जाए. तेणु ऑब्वियसली ये भी गोटे सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट. To achieve certain levels of economic growth in the country, again this statement is correct. So answer is all three. C is the correct answer. ठीक अछि. Next देखियो. Consider the following revenue receipt under the budget. Revenue receipt. Grants in aid from the foreign countries, custom duties, fees and fines. How many above come in category of non-tax revenue receipt of the government of India? देखो से कहूँ non-tax revenue. रेवेन्यू रिसिप्ट गोटे अच्छी. रेवेन्यू रिसिप्ट रे टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट आउट होची नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट. टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट कौन जोटा होची डायरेक्ट टैक्स आउट होची इनडायरेक्ट टैक्स. तेणु एठी कस्टम ड्यूटीज जोटा अच्छे एटा कौन एटा गोटे टैक्स. तेणु इजिली कस्टम ड्यूटीज को आपण एलिमिनेट कर नियंतु. ग्रांट्स इन एड सरकार को पाखु को आसुची तो ऑब्वियसली ये भी गोटे आपनकर रिसिप्ट. सेकंड फी एंड फाइन ये भी गोटे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट बोली आपण कहि परिबे. तेणु 1 and 3 करेक्ट. तेणु आंसर कोन हबो ओनली 2 दैट इज 1 and 3. सो आंसर इज बी. ठीक अछि. नेक्स्ट देखिबा. कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स. टैक्स रेवेन्यूज received by the government of India. Tax revenues received by the government of India. The loans obtained from the foreign governments, provident fund deposits, remittances received from abroad. How many of items given above credited to the consolidated fund of India? Consolidated fund of India को component use करा जाए. Consolidated fund of India रे को जिनस को एंट्री मिले यानी कि ताको इंक्लूड करा जाए. आंसर कौन हम देखो. देखो रेमिटांसेस को आपण इजिली एलिमिनेट करि परिबे. रेमिटांसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रे जीवो ही नाही. सेटा को आपण इजिली एलिमिनेट कर दे परिबे. ठीक अछि. चारटरो तीनटी अछि हम पाखरे. टैक्स रेवेन्यू को आपण इंक्लूड करिवे. टैक्स रेवेन्यू. लोन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट. जो लोन्स गुडी को अछि ऑब्वियसली से गुडी को भी आपण इंक्लूड करिवे नाही.
प्रोविडेंट फंड को आपण इंक्लूड करेंगे आपणकर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया केस रे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया केस रे। रेवेन्यू रिसिप्ट को एलाबोरेट करी, ओके वेट। तो लोन्स ऑब्टेन्ड को इंक्लूड करेंगे करेंगे, प्रोविडेंट फंड को इंक्लूड करेंगे। सो 1 and 3 को ऑब्टेन्ड यानी कि इंक्लूड करेंगे, ओनली 2 हूँ यार आंसर। रेवेन्यू रिसिप्ट विषय आप पचार देखो, बजेट जदि आप पढ़ी थे, बजेट को दुई भाग में विभक्त करा जायछि, यानी कि 2 टाइप्स आपण सिंपली जो देखिए, यानी कि बजेट इज ए स्टेटमेंट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट हैज 2 कंपोनेंट्स। वन इज सिंपली आपण कहि परिबे गोटे होची रिसिप्ट, आउट होची आपनकर एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट सिंपली कोन, रिसिप्ट मान होची जोटा को आपण रिसीव करूछन, रिसीव यू आर अर्निंग लेट्स से। एक्सपेंडिचर मीन्स यू आर स्पेंडिंग, दैट इज नोन एज बजेट। रिसिप्ट को फर्दर आपण ते डिवाइड करूछंती, वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, अनदर वन इज आपनकर कैपिटल रिसिप्ट। सेमती एक्सपेंडिचर को जदि आपण डिवाइड करिवे, गोटे होची रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आउट होची कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट कोन, रेवेन्यू रिसिप्ट होची सिंपली आपण देखिबे टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स एंड नॉन टैक्स, टैक्स कोन, टैक्स होची जेमती इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, ये सब टैक्स रेवेन्यू हला। नॉन टैक्स कहले कोन ना फी एंड फाइन, माने बिना टैक्स रे जोटा आपण रिसीव करूछन, फाइन दउछन, आपण हेलमेट पिंधिकी गले नहीं आपण फाइन दबा को पड़ला, सेटा होची नॉन टैक्स रेवेन्यू, कारण से रेवेन्यू कलेक्ट हेकी का पाखु जाउची, गवर्नमेंट पाखु जाउची। ठीक अछि, तो ये होची रेवेन्यू रिसिप्ट। बजेट को जदि डाउट भी अच्छी, एनसीईआरटी रे आपनकर बजेट चैप्टर रे डिटेल मेंशन अच्छी, आपण ताकू कवर करि परिबे। नेक्स्ट, consider the following statements. Statement 1, India follows the progressive tax system for individual income taxpayer. ठीक अछि, India follows progressive tax system. Progressive tax system माने कोन ना, simply with the increase in income, the income रखंतु, एठी tax rate रखंतु, with the increase in income, tax rate is also increasing. Are you getting my point? With the increase in income, tax rate is also increasing. That is the progressive tax system. Positive relationship between the tax rate and income. Progressive taxation can help in achieving the goal of reducing income inequality in India. Income inequality जो अच्छी ताको reduce करिवार हमको help करिवो, absolutely correct। काहे कि ना जिते इनकम जा इन देखो तो टैक्स रो जो बेस या थ्योरी कौन कहूचे, टैक्स कहा ऊपर इंपोज करा जाए, टैक्स इंपोज करा जाए ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एबिलिटी टू पे। जहार जेते कैपेसिटी एबिलिटी से सेते टैक्स पे करिवो। तनु विद द इंक्रीज इन इनकम आपण दी प्रोग्रेसिव टैक्स आपण जानि छथि, आउट अछि प्रोपोर्शनल टैक्स। ये प्रोपोर्शनल टैक्स माने कोन, अक्रॉस द इनकम ब्रैकेट फ्लैट टैक्स बोले तो कुआ जाए, या फिक्स टैक्स रेट। जिते इनकम से पर एनम 1 लाख 5 लाख 15 लाख 1 कोटी गोटी प्रकार टैक्स इंपोज करा जो, दैट इज नोन एज प्रोपोर्शनल टैक्स, दैट इज आल्सो नोन एज द फ्लैट टैक्स। ठीक अछि, एठी आंसर होची ऑफ कोर्स ए। नेक्स्ट, consider the following statements regarding the revenue receipt of the government of India. Revenue receipt of the government of India, answer कौन देखिबा हमें, they are non-redeemable in nature. They either reduce the asset value of the government or create liability for the government. Interest and loans is considered a revenue receipt by the government. ठीक अछि, देखिबा रेवेन्यू रिसिप्ट मु आपन कोन कहतली, गोटे होची टैक्स, आउट होची नॉन टैक्स। रेवेन्यू रिसिप्ट माने कोन, जोटा कि सरकार रो काइंड ऑफ अर्निंग बोली आपन कहि परिबे, सरकार रो काइंड ऑफ अर्निंग बोली कहि परिबे आपन। ठीक अछि, तबे सरकार रो अर्निंग को जगह रे होची, दे आर नॉन रिडीमेबल। नॉन रिडीमेबल माने कोन,
एटा लायबिलिटी नुहे कि आपन को इन फ्यूचर ताकू रिपे बैक करबा को पड़िबो इफ यू वांट टू रिपे इट बैक तबे सेटा रिसिप्ट केबे भी होबनी सेटा गोटे लायबिलिटी हिसाब रे रहइबो बुझियो जिनसेटा जोटा कि रेवेन्यू रिसिप्ट माने टैक्स थ्रू रे जो कलेक्ट करूछथि आउ नॉन टैक्स थ्रू रे जो कलेक्ट होउछ तेनु नॉन रिडीमेबल आपण इजीली एटा को कहि परिबे सो फर्स्ट इज करेक्ट सेकंड से कोन कहूची दे ईदर रिड्यूस द एसेट वैल्यू और द ऑफ द गवर्नमेंट और क्रिएट लायबिलिटी मु पुन थरे कहिची एठी एसेट वैल्यू किछि रिड्यूस होउची कि एसेट वैल्यू को जगह रे रिड्यूस हुए एसेट वैल्यू रिड्यूस हुए कैपिटल रिसिप्ट रे मन रखथिबे एटाको कैपिटल रिसिप्ट रे एसेट वैल्यू रिड्यूस हुए काहे कि कैपिटल रिसिप्ट रे एसेट वैल्यू एथि पय रिड्यूस हुए जे पीएसयूज रो जो आपनकर शेयर्स गुडी को अछि ताकू हमें सेल कर दो अंडर द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी आर यू गेटिंग माय पॉइंट अंडर द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी वी सेल दोस शेयर्स ऑफ पीएसयूज डिसइन्वेस्टमेंट सेटे को कहा जाए रिड्यूसिंग द एसेट माने गोटे टाइम रे सेटा आपनकर एसेट थिला ताको आपण कम करी करी चलचन बिकी बिकी चलचन अदर वन इज द क्रिएट द लायबिलिटी कैपिटल रिसिप्ट रो गोटे पार्ट मु एटा कहली सेलिंग दोस एसेट्स ऑफ पीएसयू आउ गोटे पार्ट होची कैपिटल सॉरी अपन कैपिटल रिसिप्ट रो दैट इज द बोरोइंग तो बोरोइंग ऑलवेज क्रिएट्स लायबिलिटी ठीक अछि सो एटा को आपण इजीली एलिमिनेट करि परिबे थर्ड देखंदु इंटरेस्ट ऑन लोन्स इज कंसीडर्ड अ रेवेन्यू रिसिप्ट बाय द गवर्नमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन्स जो लोन ऑलरेडी सरकार काहा को देई चंदी से लोन अगेंस्ट से कौन नौचंदी इंटरेस्ट and that interest is part of what again the revenue receipt correct and specifically non tax revenue that is interest receipt so third is correct so answer is what only 2 B आगुरु देखंतु ए जो ऑप्शन गुडी को 1 only 2 only both 1 and 2 ए सब थिला बर्तन देखंतु only 1 ए टाइप रो हेगला ई जगह आपन को एक्जाक्टली जानिया को पड़िबो एठी आउरी डिफिकल्ट लेवल बढ़ुची काहेकी ने एठी ठीक अछि तीनटी स्टेटमेंट अछि बट कोउटा करेक्ट आउ इनकरेक्ट सेटा जानिबा को पड़िबो आपन तेबे जाय कि आपन ओनली 1 गोटिए ना दुईटी जगह करेक्ट ना तीनटी जगह करेक्ट आपन को फाइंड आउट करिबा को पड़िबो नेक्स्ट Next, with respect to capital receipt of the government of India under the budget, consider the following statement. Capital receipt मैं आपन को कही first होची disinvestment, second होची borrowing. ठीक है जी देखिए all capital receipts have a debt creating nature. All capital receipt have a debt creating nature. Capital receipt जेतोला हमें देखुचे देखो ये होची budget related ही question. एवं बजेट गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक as far as prelims is concerned कारण बजेट रु लगातार भाव क्वेश्चन आपनकर आसुची प्रिलिम्स रे कैपिटल रिसिप्ट को टिके देखिबा कैपिटल रिसिप्ट मु कोन आपन साथ डिस्कस करथिली गोटे होची डेप्ट क्रिएटिंग एसेट या डेप्ट क्रिएटिंग आउट होची नॉन डेप्ट क्रिएटिंग मन रखते बेटा गोटे होची डेप्ट क्रिएटिंग आउट होची नॉन डेप्ट क्रिएटिंग ये डेप्ट क्रिएटिंग माने कोन ना जेतोळे आपण कोन करचंती लोन नौचंती या बोरोइंग डेप्ट क्रिएटिंग डेप्ट माने कोन लोन जोटा नॉन डेप्ट क्रिएटिंग माने कोटा सिंपली disinvestment when you are selling those assets so all capital receipts जे debt creating नुहे ठीक अछि एटी नॉन डेप्ट भी अछि एटा को आपण इजीली एलिमिनेट करि परिबे सेकंड होची प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स फॉल अंडर द कैपिटल रिसिप्ट प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स एटी गोटे जिंस बुझिया पई चेष्टा करिवे प्रॉफिट अर्न किए करे profit and dividends received by the government of India from the public sector undertakings fall under capital receipt. Profits and dividends जोटा अछि सेटा होछि आपनकर कोन ना नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट बोली आपण कहि परिबे जेमति लोन रे हमें इंटरेस्ट रिसीव करूचे
सेमती प्रॉफिट हो किंबा रिसिप्ट प्रॉफिट हो या डिविडेंड हो एटा को आपण रेवेन्यू रिसिप्ट रे ताको काउंट करिवे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट बोली आपण ताको कहि परिबे तेणु एठी आंसर होची कोन आंसर होची आपणकर डी नाइदर वन नॉर टू ठीक अछि नेक्स्ट which of the following statements correctly describes the meaning of debt trap it refers to a situation in which debt trap कहले आमे कोन बुझु debt trap the government borrows mainly to meet its existing debt obligations माने गोटे ऋण को फुलफिल करबा पई आपण आउ गोटे ऋण करूछन या गोटे ऋण को पे करबा पई फॉर द रीपेइंग ऑफ द ओल्ड लोन you are taking another loan that means you are completely on that trap correct B is the correct answer next with reference to the government e-marketplace consider the following statements government e-marketplace consider the following statements first one is it is mandatory for all center state and other government agencies to procure through government e-market portal मैं आपन यार गवर्नमेंट ई प्लेस विषय में डिस्कस ऑलरेडी करथिले कहीं माने कोन एग्जैक्टली एटा एग्जैक्टली होची गोटे पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल जहा थ्रू रे जो गवर्नमेंट ऑफिसेस गुडी को अछि गवर्नमेंट एजेंसीज गुडी को अछि समाने प्रोक्योर करि परिबे डिफरेंट प्रोडक्ट्स सपोज गवर्नमेंट ऑफिस स्टेशनरी किनिबा पई चाहूचे तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज माने अछंदी those who are manufacturing those office stationery items they can enroll themselves in that e-marketplace simply आपण जेमती मिंत्रा मिशो फ्लिपकार्ट एठू किणुचन अमेज़न रो गवर्नमेंट भी सेमती किनि परिबो सो इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल सेंटर एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन से कहूची सेकंड स्टेटमेंट देखो इट इज डेवलप्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस in collaboration with the National Informatics Center. It is mandatory for sellers to enter the country of origin while registering new products on government e-marketplace. यार आंसर कौन हबो कोंतु देखो फर्स्ट होची mandatory for all center state other government agencies to procure through GM portal या government e-marketplace portal बोली से कहूची ठीक अछि तेणु फर्स्ट स्टेटमेंट ऑब्वियसली आपनकर करेक्ट अछि इट इज डेवलप्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कोलैबोरेशन विथ से कहूची नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जदियो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जदियो एटा डेवलप करिछि बट जदि मिनिस्ट्री आपण देखिबे मिनिस्ट्री ऑब्वियसली आपनकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नु है ठीक अछि तो ये होची आपनकर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड जो अछि
ता द्वारा एटा को कोलाबोरेशन ने स्टार्ट करा जायछि एंड इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल सेलर्स टू एंटर सेटा जो कहउछि आपनकर एंटर कंट्री ऑफ ओरिजिन सेटा कंट्री ऑफ ओरिजिन किछि मेंशन करबा नाही न्यू प्रोडक्ट्स तनु गोटी स्टेटमेंट होछि एठी करेक्ट जोटा कि ओनली वन बोली आपण ए बोली कहि परिबे ए बोली आपण कहि परिबे एटा ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा which one of the following situation best reflects the term indirect transfer often talked in media with reference to India indirect transfer माने कोन indirect transfer होछि a foreign company transferred shares and such shares derive their substantial value from assets located in India मन रखते बेटा को a foreign company transfers shares and such shares derive their substantial value from assets located in India ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा consider the following statements according to the expenditure proposals of the union government subsidies attract the second highest allocation after interest payment in the union budget 23-24 ठीक अछि The food subsidy in budget 23-24 accounts for over 2/3 of the total expenditure on all subsidies. से पचारुछि कोन ना इनकरेक्ट से इनकरेक्ट पचारुछि इनकरेक्ट को देखिबे इनकरेक्ट से पचारुछि तो यार आंसर कोन होबा देखंतु दुईटी जगह स्टेटमेंट को यदि भल से आपण देखिबे अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट सब्सिडीज अट्रैक्ट द second highest allocation after interest payment in the union budget 23-24 so generally आपण देखिबे जे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पार्ट रे एठी जदि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पार्ट थांता तो डेफिनेटली आमे कंसीडर करि थान बट एठी खाली एक्सपेंडिचर देइ तो ऑब्वियसली सब्सिडीज सेकंड हाईएस्ट नो है ठीक अछि सेकंड स्टेटमेंट देखो तो फूड सब्सिडी इन बजट 23-24 अकाउंट्स फॉर 2/3 of the total expenditure on all subsidies 2/3 नुह 2/3 होची केते होबो आपण देखंतु 66% obviously 66% जे केवल फूड सब्सिडीज रे जाउची दैट इज अगेन नॉट करेक्ट तो दुईटी जाक स्टेटमेंट होची इनकरेक्ट नाइदर वन नॉर टू बोली आपण कहि परिबे एटी जदि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थादा समहाउ वी कैन कंसीडर एटी टोटल एक्सपेंडिचर अछि त माने रेवेन्यू प्लस कैपिटल कथा से कहउची ठीक अछि नेक्स्ट with respect to policy statements mandated under the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003 FRBM Act consider the following pairs policy statements and objective macroeconomic framework statement देखंतु ये क्वेश्चन चांसेस अछि आसीबार या आसी पारे कारण यूपीएससी क्वेश्चन ऑलरेडी पचारछि कि एतले फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजेट मैनेजमेंट एक्ट अनुसार बजेट सहित किसी स्टेटमेंट की भी सरकार को प्रेजेंट करने को पड़े पार्लियामेंट रे तो जो स्टेटमेंट्स रो मेन मोटिव कौन पर्पस कौन फर्स्ट से कहूँ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट इट इंक्लूड्स एन असेसमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फिस्कल बैलेंस जीडीपी ग्रोथ रेट एंड एक्सटर्नल सेक्टर बैलेंस सेकंड से कहूँ मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट इट इंक्लूड्स डिटेल बजेट एस्टिमेट्स फॉर इंडिविजुअल प्रोग्राम्स और activities third से कहूँ fiscal strategy statement it sets target for monitoring 5 specific fiscal indicators ठीक अछि तीनोटी स्टेटमेंट से दउछि अपन देखंतु फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजेटरी मैनेजमेंट एक्ट जोटा 2003 या विषय में आपन को कहितले अगरु कि एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करिवा पई एक्सपेंडिचर को रेगुलेट करिवा पई ठीक अछि तबे कोटा ठीक हबो या को स्टेटमेंट एग्जैक्ट एक्सप्रेस करूची आंसर करिवे आपण माने
देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जोटा अच्छी आपनकर फर्स्ट अच्छी आपनकर मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट कौन कहूची से कहूची असेसमेंट ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट को असेस करवा एक्सटर्नल सेक्टर को बैलेंस देखेवा एवं फिस्कल बैलेंस देखेवा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तो ये स्टेटमेंट ही आपण सिंपली करेक्ट बोली कहि परिबे सेमती देखो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट कौन कहूची ना आउटलाइन्स द गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी objectives outlines the fiscal policy objectives and strategy specified period for 3 years तो सेकंड स्टेटमेंट को आपण इनकरेक्ट बोली कहि परिबे सेकंड को इनकरेक्ट बोली कहि परिबे थर्ड से कहूची फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट सेटा से कहूची कि गवर्नमेंट्स फिस्कल प्रायोरिटीज टार्गेट्स नुहे एटा फिस्कल प्रायोरिटीज फॉर द अपकमिंग ईयर बट ये कौन कहूची 5 स्पेसिफिक फिस्कल इंडिकेटर तो ये भी इनकरेक्ट आपण ताको कहि परिबे केवल फर्स्ट स्टेटमेंट होची करेक्ट आंसर होची ओनली वन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपण एनसीईआरटी रु पाई परिबे एनसीईआरटी रे जो बजेट वाला चैप्टर अछि एनसीईआरटी रे आपण एटा को पाई परिबे ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा which of the following statement best describes the fiscal deficit in Indian context fiscal deficit in Indian context it represents the gap between the government's total expenditure and its total receipt excluding borrowing fiscal deficit माने कौन fiscal deficit होची total एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट ये टोटल रिसिप्ट रे दुईटी जिनस आमे देखतेले कोन ना गोटे होची रेवेन्यू रिसिप्ट आ गोटे होची कैपिटल रिसिप्ट रे भी मु आपन को कहितली गोटे होची डेफ्ट क्रिएटिंग जोटा कि बोरोइंग आ गोटे होची नॉन डेफ्ट क्रिएटिंग तनो ए जो टोटल रिसिप्ट जोटा अछि से टोटल रिसिप्ट रु आपण सिंपली माइनस कोटा करिवे जोटा आपनकर डेफ्ट क्रिएटिंग अछि डेफ्ट क्रिएटिंग जोटा लोन बोरोइंग जोटा अछि सेटा को सिंपली आपण को माइनस करिवार अछि माइनस कले आपण कोन पाइबे फिस्कल डेफिसिट एटा को मन रखथिबे फिस्कल डेफिसिट आपण पाइबे with reference to off budget borrowings consider the following statements it refers to the borrowings made by the central public sector enterprises on the behalf of the union government. They are counted as a part of fiscal deficit. Second, the interest accrued on these are paid entirely from the government budget. It reduces the parliamentary control over the executive in financial matter. ठीक अछि आंसर करंतु ऑफ बजेट बोरोइंग ये कॉन्सेप्ट के कहि परिबे ऑफ बजेट बोरोइंग कोन ऑफ बजेट बोरोइंग माने कोन बोरोइंग देखो बोरोइंग टर्म टी एठी मेंशन अछि ता माने गवर्नमेंट फंड बोरो करे या रेजेस फंड फॉर वेरियस पर्पसेस जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो किंबा अन्य कोनोसी पर्पस पई से बोरो करूची के करूची गवर्नमेंट करूची ऑफ बजेट बोरोइंग ता माने सेटा को विदाउट इंक्लूडिंग इन द एक्सपेंडिचर साइड ता माने बजेट रे सेटा को हमें बोरोइंग टा को रिफ्लेक्ट करूनु केवल सेटा को बोरो करा जाउची गवर्नमेंट द्वारा बट बजेट रे मेंशन करा जाउ नाही सित पय ता ना होची ऑफ बजेट बोरोइंग ठीक अछि
तेबे देखिबा दे आर काउंटेड एज ए पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट एब्सोल्युटली नॉट जदि आपण ताकू मेंशन करिवे बजेट रे तेबे जायकी सेटा काउंट हे परिबो जदि ऑफ बजेट बोरोइंग माने सेटा को हम फिस्कल डेफिसिट रे काउंट करू नाहे ठीक अछि फर्स्ट देखंतु इट रेफर्स टू द बोरोइंग्स मेड बाय द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एटा को करेक्ट आपण कहि परिबे द इंटरेस्ट accrued on these are part entirely by the government budget from the government budget absolutely yes government budget ru hi सेटा को पे करा जाय it reduces the parliamentary control over the executive in financial matter absolutely yes कारण से बोरोइंग को आपण बजेट रो पार्ट जेहेतु करंती नाही तेनु पार्लियामेंट रो कोनोसी कंट्रोल सेठी नथाय बट बजेट रो आपण ताकू पे करंती सो सेकंड को एलिमिनेट जदी करूचंदी तीनोटी होची करेक्ट ओनली 3 यानी कि C is the correct answer. Consider the statement, the gross fiscal deficit of a country serves as a crucial indicator for evaluating the overall economic growth and stability. ठीक अछि सेकंड कोन कहूची सेकंड से कहूची high fiscal deficit strains the economy by raising borrowing cost, inflation and crowding out private investment, thereby hindering growth in the economy. First statement se kuchi the fiscal deficit of a country serves as a crucial indicator for evaluating the overall economic growth and stability. Definitely crucial indicator economic growth विषय आपण जानि परिबे जदि आपनकर gross fiscal deficit आपण देखिबे. सेकंड से कहूची फिस्कल डेफिसिट प्रॉब्लम कौन क्रिएट करे एक तो बोरोइंग कॉस्ट को इंक्रीज करे इन्फ्लेशन देखा मिले कारण यू आर स्पेंडिंग मोर तो पीपल हैव मोर मनी दे कैन स्पेंड मोर मनी इन द इकोनॉमी इन्फ्लेशन देखा जीवार चांसेस अच्छी क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडिंग आउट आउ क्राउडिंग इन दुईटी कॉन्सेप्ट अच्छी क्राउडिंग इन माने मोर माने पॉजिटिवली इंपैक्टिंग दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजिंग क्राउडिंग आउट माने कौन क्राउडिंग आउट माने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल कम डाउन विल बी रिड्यूस्ड दैट इज क्राउडिंग आउट ठीक अच्छे तो सेटा को मन रखते हुए तो आंसर कौन आंसर होची ए बोथ स्टेटमेंट एंड 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज गोल्डन रूल ऑफ पब्लिक फाइनेंस आंसर करंतु गोल्डन रूल ऑफ पब्लिक फाइनेंस आंसर कौन होबो it states that over the economic cycle the government should borrow only to invest and not to fund current expenses so answer is of course A. It states that over the economic cycle the government should borrow only to invest not to fund current expenses that is golden rule of public finances यदि आपण बोरो करूचंदी तेबे आपण इन्वेस्ट करंतु एसेट क्रिएट करंतु केवल खर्च करिबा करंट एक्सपेंसेस को मीट करिबा पई जदि बोरो करूचंदी दैट इज समथिंग लीथल आंसर इज ए which of the following statements is correct regarding the impact of changes in tax rates and government spending on the money supply and the aggregate demand ठीक अछि which of the following statement is correct regarding the impact of changes in tax rates and government spending on the money supply and the aggregate demand an increase in the government expenditure and decrease in tax rate increase in government expenditure decrease in tax rates generally leads to an increase in the money supply and the aggregate demand ठीक अछि ये होची आपनकर सी होची आपनकर करेक्ट आंसर मन रखतेबे increase in the government expenditure and decrease in tax rate generally leads to increase in the money supply and the aggregate demand जोटा कि इन्फ्लेशन देखा जीवार चांसेस थाए इकोनॉमी रे कारण टैक्स रेट को आपण कम करछंदी एक्सपेंडिचर बढ़ाउछन तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन देखा जीवो with reference to compulsory licensing of patents consider the following statements compulsory licensing of patents first one it allows an applicant to produce a patent product without the consent of the patent owner. Second, it is included in the WTO's trade-related aspects of intellectual property rights agreement. Third, Indian laws do not allow the grant of compulsory licensing. Answer कौन होगा?
देखो एटा को मन रखिथिबे आपण सब WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अछि सेठी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट रे आपण इंक्लूड करि परिबे कंपलसरी लाइसेंसिंग ऑफ पेटेंट्स को दैट कम्स अंडर WTO ट्रिप्स ठीक अछि सेकंड कोन से कहू छी प्रोड्यूस ए पेटेंट प्रोडक्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट ओनर एंड थर्ड से कहू छी Indian laws do not allow the grant of compulsory licensing. तो सिकुची do not allow the grant of compulsory licensing. Do not allow in the sense कि compulsory licensing आपनकर आवश्यकता नहीं से जोटा कि particularly सिकोच क्वेश्चन को स्लाइटली आप देखी ने बेटी थर्ड को देखिए जो पेटेंट एक्ट 1970 हमर अछि से पेटेंट एक्ट रे एक्चुअली कोन कहू छी रिवाइज ता म आपन को क्रॉस चेक करी आपन कहि देबी ठीक अछि इट द करेक्ट स्टेटमेंट अछि करेक्ट स्टेटमेंट आपन कर अछि मते जोटा लागु छी आपन कर ये होची इनकरेक्ट एवं ये होची आपन कर करेक्ट विदाउट द पेटेंट ओनर without the consent of the patent owner. So third statement is incorrect कारण do not allow अच्छी definitely हेटा allow अपन को compulsory licensing नवा को पड़िबो ये होचे अपन करो correct statement अच्छी आंसर only 2 हे पारे B एटा को still अपन टिके क्रॉस चेक करि नेबे ठीक अछि नेक्स्ट with reference to global economy which one of the following statements most appropriately describes the term international investment position often seen in news. International investment position often seen in news. International investment position आपने ये देखो it reflects a country's external financial assets and liabilities at a specific point in time. External financial assets, liabilities at a specific point in time. So answer is what? B. Consider the following statements about the National Social Assistance Program. National Social Assistance Program. देखिए National Social Assistance Program रे कोन अछि First से it represents a step towards the fulfillment of the some of the directive principles of state policy. National Social Assistance Program होची simply जो welfare program गुड़िक launch करा जाउची सरकार को द्वारा. Annapurna scheme is one of the 5 sub schemes under the program. Third, an applicant must belong to a below poverty line family to avail themselves to benefits National Social Assistance Program. तो यदि statement तीनटी जगह देखिबे आंसर होची आपनकर all 3 कारण तीनोटी जगह statement होची आपनकर correct statement. Consider the following statements with respect to Janani Suraksha Yojana. It is a safe motherhood intervention of the state health department. Its objective is to reduce maternal and neonatal mortality among poor pregnant women. It aims to promote institutional delivery. Objectives includes providing public health facilities to sick infants up to 1 year of age. ठीक अछि तो ये आंसर कौन हो देखो एटा होची जननी सुरक्षा योजना ई जो कंपोनेंट अछि ना फोर्थ कंपोनेंट कहा अंडर अछि JSSK ऑल्दो स्कीम अबे आ नाही जननी शिशु सुरक्षा योजना सेटा डिस्कंटिन्यू हे जाई छी तो एटा को आपण एलिमिनेट कर दे पारिबे इजीली बाकी जो तीनटी अछि दैट इज करेक्ट institutional delivery maternal and neonatal mortality को चेक करिवा पई and state health department intervenes it definitely करिवो answer होची only 3 C is the correct answer. Which of the following examples best defines the essence of human capital formation? Human capital formation चारटा जाक जो ऑप्शन अछि आपण देखंतु डी ऑप्शन को
Educated teachers fostering students' intellectual growth by imparting knowledge. Students' intellectual growth, that is intellectual growth, skill हो या को professionally ସେମାନେ equipped हुअन्तु तबे definitely सेटा होची आपनकर कोन ना human capital formation रे help करूची. D. With reference to एवं human capital होची आपनकर intangible आपण जानिथिबे. Intangible ये question भी आसीची आगुरु. Physical capital होची tangible, human capital होची intangible. Next, with reference to Indian economy, consider the following statements. The share of formal jobs has remained greater than informal jobs in India in the post-liberalization period. Absolutely wrong statement. कारण liberalization period समय रे informal jobs रो अधिका आपण को देखिबा को मिलिबो काहेकि आपण देखंतु जो हमर अछि अनऑर्गेनाइज सेक्टर आउट अछि ऑर्गेनाइज सेक्टर. Unorganized sector percentage केते almost around 95% in India. 95%, 94-95% unorganized sector. Organized sector होची only this 5 or 6%. It होची wrong. The share of the services sector in Indian GDP has remained higher than agriculture sector in the post-liberalization period. It होची absolutely correct. So B statement जोटा अछि या second statement जोटा अछि सेटा होची आपनकर कोन करेक्ट. ठीक अछि तबने एठी आपण कहि परिबे फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट या assertion is correct, assertion is correct, reason is incorrect. Sorry, उल्टा कहि दिलु. Assertion is incorrect, reason is correct. So D is the correct answer. It होची just reverse. Formal is very less, informal is very high. जो आपण gig economy जानिथिबे, gig economy आपनकर informal रे ही आसुची. To know whether the rich are getting richer, the poor are getting poorer, it is necessary to compare. Rich are getting richer, poor are getting poorer. ठीक अछि कोन पाई necessary एटा को compare करिवा. The distribution in income of an identical set of income recipients in different period of time. The distribution of income को जानिबा पई different set of income recipients in different period of time आपण को जानिबा दरकार कि rich are getting richer, poor getting poorer. Consider the following periods with reference to various prime ministers of India and the poverty alleviation scheme introduced under their tenure. Prime Minister Poverty Alleviation Scheme introduced by the government. देखिबा को गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस करा जाइथिला. फर्स्ट होची इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जवाहरलाल नेहरू से कोची. इंदिरा गांधी जवाहर रोजगार योजना, फूड फॉर वर्क लाल बहादुर शास्त्री, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पीवी नरसिम्हा राव. एटा आंसर कोन हबो कोनतो आपण माने. और सिंपली देखि परिबे पीवी नरसिम्हा राव नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम केबे लॉन्च करा जाइतिला. एटा 1995 रे ही लॉन्च करा जाइतिला. तबे एटा को आपण इजीली करेक्ट बोली कहि परिबे फोर्थ को. बाकी जदि आपण देखिबे लाल बहादुर शास्त्री फूड फॉर वर्क प्रोग्राम एक्चुअली सेटा इंदिरा गांधी का समय आस्तेला. जवाहर रोजगार योजना एवं सेटा आस्तेला आपनकर लाल बहादुर शास्त्री का समय एवं आईआरडीपी अच्छी सेटा भी 9 इंदिरा गांधी का समय रे आपनकर आस्थिला जदि आपण देखिबे. तो आंसर होची एठी कोन ना ओनली वन, केवल फोर्थ ऑप्शन टी आपनकर करेक्ट अछि. ठीक अछि नेक्स्ट देखिबो. With reference to the measurement of poverty levels, consider the following statements. Absolute poverty is when people earn just enough money to afford the bare necessities of life. Relative poverty is when people earn just enough money to maintain
द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी दे लिव इन। तो आंसर कौन हम? मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लेवल से कौन इनकरेक्ट फाइंड आउट करने देखने बेटा को इनकरेक्ट। एब्सोल्यूट पॉवर्टी आप जानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी हूँ कौन सर्टन परसेंटेज जो माने कि बिलो पॉवर्टी लाइन तले अच्छा ठीक अच्छे। तो तार डेफिनेशन नुहे कि व्हेन ए पीपल अर्न जस्ट इनफ मनी टू अफोर्ड बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। रिलेटिव पॉवर्टी माने कौन इनइक्वालिटी। तो दुईटी जगह स्टेटमेंट हूँ आपंकर इनकरेक्ट जाऊँगी। तो बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट, which of the following statement with regard to NABARD it was established on the recommendation of the Narsimhan committee? आंसर करंतु NABARD को कमिटी recommendation द्वारा डकू स्टार्ट करा जायतिला। It provides long-term refinance to commercial banks when providing loans for the farm and non-farm activities. It is accredited as a national implementing entity under the Green Climate Fund. It is responsible for the supervision of regional rural bank और आरआरबी जो ग्रामीण बैंक गुड़ी को आपन करा अछि। फोर्थ स्टेटमेंट एटा कहूछि तबे कोटा करेक्ट कोटा इनकरेक्ट कोंत। नरसिम्हन कमिटी इंपोर्टेंट कोथि पई ना दुईटी बैंकिंग रिफॉर्म कमिटी गठन करा जायतिला। दुईटी जाक बैंकिंग कमिटी जो रिफॉर्म या रिफॉर्म पाई जो बैंकिंग कमिटी गठन करा जायतिला दुईटी जाक नरसिम्हन कमिटी आपण जानिथिबे। गोटे 91 92 रे आ गोटे 97 98 रे। तेणु से केस में नरसिम्हन द इंपोर्टेंट बट ये जो कहूँ कि नाबार्ड रिकमेंडेशन होता नरसिम्हन कमिटी पई सेटा नरसिम्हन कमिटी नुह सेटा हूँ सीवारमन कमिटी। मन रखते बेटा को सीवारमन कमिटी। चारोटी स्टेटमेंट अच्छी सीवारमन कमिटी द्वारा एटा को गठन करा जायतिला। सेकंड हूँ डायरेक्टली नाबार्ड कौन करे लोन दिए नहीं कंज्यूमर को से कमर्शियल बैंक्स को लोन दिए जहाँ फल से मैंने नॉन फार्म एंड फार्म एक्टिविटीज नॉन फार्म माने जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जिनस ठीक अच्छे। थर्ड देखो नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी अंडर द ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड को भी नाबार्ड ताकू मेंटेन करुच्ची प्लस रीजनल रूरल बैंक्स को से सुपरवाइज करुच्ची। आंसर हूँ आपनकर ओनली 3। Which of the following statement best describes the meaning of term social medicine? Social medicine. Answer करो तो social medicine. A social awareness and health that prevents the spread of disease in a community. A social awareness and the health. जमती कोविड आपण जदि देखिबे the more of social awareness कोन पे hygiene maintain करबा को पड़िबो। जमती देखिबे जदि आपण public प्लेस रे स्नीजिंग करूचंदे देन यू हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोटोकॉल कि स्नीजिंग ओपनली एमती करिवे नाही बिकॉज दैट कैन स्प्रेड दिस कोविड-19। तो सी होची सोशल हाइजीन या सोशल अवेयरनेस पई सेटा को सोशल मेडिसिन बोली कहा जाय। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स वन लेबल्ड एज असर्शन अदर इज रीजन। असर्शन देखिबा देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन Human Development Index, Sustainable Development Goals, ranking of the Indian states. Second, the underlying dimensions of SDG targets are closely related to education and health aspects. Human Development और SDG जो आपनकर अछि सेटा कोन इंटरलिंक्ड। आपण दी SDG रैंकिंग जते बेटर हबो आपनकर SDG गोल्स को जते आपण इजीली अचीव करि परिबे तो डेफिनेटली आपनकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टी इंप्रूव हबो। सेकंड से कहूँ द अंडरलाइंग डायमेंशंस ऑफ एसडीजी टारगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स। ऑफ कोर्स यस। तो असर्शन रीजन जोटा आपनकर अछि तो एठी आंसर आपनकर कोन हबो आंसर हबो आपनकर ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। With reference to the Indian economy, consider the following statements. An increase in the NEER indicates the appreciation of rupee. An increase in NEER
leads to appreciation of Indian rupee. Second, an increase in the real effective exchange rate indicates the improvement in the trade competitiveness. Third se kouchi, an increasing trend in domestic inflation relative to the inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between NEER and NEER. REER kono inflation adjusted. REER already ଆମେ discuss କରିଛେ REER ବିଷୟରେ real effective exchange rate ସେ ହେଉଛି weighted average ମାନେ NEER କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ inflation adjust କରିବେ ସେତେବେଳେ REER ବାହାରିବ ତ increasing trend in domestic inflation relative to the inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between NEER and REER. Of course, yes. काहेकि ना NEER रे आपण को inflation को manage करूछन या को inflation विषय डिस्कस करूछन सेटा केवल आपनकर डोमेस्टिक रे तेणु डोमेस्टिक इनफ्लेशन आ इंटरनेशनल मार्केट रो प्राइस जदि अलगा रहिबो तबे डाइवर्जेंस आपनको देखिबा को मिलिबो तो थर्ड स्टेटमेंट ऑब्वियसली आपनकर सेटा होची करेक्ट फर्स्ट को देखंतु इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स अप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी दैट इज आल्सो करेक्ट बट जो इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट indicates an improvement in trade competitiveness, that is again incorrect. Ita hochi ulta, reverse is the case, so C is the correct answer. Next, with reference to Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, which of the following is incorrect? Suppose incorrect quota find out kariba. There is no minimum balance requirement, so that is correct. Offers bank account holders accidental insurance coverage up to 2 lakhs. Correct. Overdraft facility up to 1 lakh. Overdraft माने कौन? Overdraft माने जितने आपन को बैंक रे पैसा न थिबो तथेबे you can withdraw that money. जेमती क्रेडिट कार्ड टाइप रो क्रेडिट कार्ड को यूज करके आपन कैश मध्ये withdraw करि पारे. ठीक अछि सेटा को कहा जाय ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तो ओवरड्राफ्ट से कुछ 1 लाख रुपीस रो तो 1 लाख नुहे आई थिंक 3000 और समथिंग अछि गोटे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज 1 लाख नुहे more than half of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana bank account holders are women. That is also correct. जो SSG मानक को एठी include करा जायछि self help groups. Consider the following options with regard to the agricultural markets in India. Guarantee of minimum support price for the agricultural products. Second, storage of surplus stocks. Storage of surplus stocks of wheat and rice by Food Corporation of India. Distribution of food staples, sugar through the public distribution system. How many of the above are policy measures taken by the government to improve agricultural marketing? तो agricultural marketing पाई सरकार को steps नहीं चंदी. Obviously guarantee of minimum support price, guarantee in the sense कि एठी legal guarantee नुहे normal guarantee. Legal है गला तो एटा law अनुसारे पुनी आपन को देखिबा को पड़िबो. एटा होची normal guarantee. Second, storage of surplus stocks of wheat and rice जोटा कि FCI माध्यम रे होची FCI माध्यम रे. Third होची distribution of food staples and sugar through the PDS. So answer is of course what? All three. Agricultural market ପାଇଁ सरकार को steps नौचंदी, that is all three. Next, consider the following statements. The poverty gap is the ratio by which the mean income of the poor falls below the poverty line. The poverty gap is the ratio by which the mean income of the poor falls below the poverty line, and the intensity of poverty measures the average deprivation among the people living in multidimensional poverty. The poverty trap refers to an economic system in which difficult to escape poverty. ठीक अछि तो एठी आंसर कोन हबो poverty gap ratio कोन ना average या mean income of the poor falls below the poverty line. तामाने poverty line जो गोटे अछि ता तळु को average income वाला ता तळे ही रहउछन तो that is poverty gap. Intensity of poverty कोन measure करे ना deprivation माने within that poverty केते level रो जोटा poorest of the poor बोली हमें कहउछे intensity of poverty. Poverty trap कहले कोन बुझा जाय ना difficult to escape कारण आपण से trap रो बाहरी परिबे नाही सेतपई आंसर होउची कोन all three. Next, with reference to rural India, who are referred to as Arthias. Arthias term आपण जानथिबे rural India रे यूज करा जाय. Arthias को माने middlemen in the agricultural
transactions, middlemen in the agricultural transactions. With reference to organic farming, consider the following. First से कौन कहूची? Shorter shelf life, increased risk of pests and diseases, soil degradation, lower yield. How many of above are disadvantages of organic farming? Organic farming रो disadvantages कौन? Soil degradation obviously नुह soil degrade हेबो नाही एटा को आपण माने एलिमिनेट करि परिबे बाकी देखंतु ऑर्गेनिक फार्मिंग रे लोअर यील्ड ये सब कोर्स लोअर यील्ड थाए कारण कम उत्पादन हबो फर्टिलाइजर जदि देबे डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़िबो इंक्रीज्ड ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस ऑर्गेनिक फार्मिंग रे यार रिस्क काफी हाई शॉर्टर सेल्फ लाइफ भी तेणु केमिकल पेस्टिसाइड ये सब यूज आपण करू नांती तेणु एटा को एलिमिनेट कले बाकी 1 to 4 होची डिसएडवांटेजेस और रिस्क बोली एटा को कहि परिबे आपण रिस्क तो आंसर होची कोन सी ओनली 3 नेम द इकोनॉमिस्ट हु रिलेटेड पॉवर्टी विथ द कांसेप्ट ऑफ एंटाइटलमेंट कांसेप्ट जे आनी के आस्थिले पॉवर्टी सहित अमर्त्य सेन आउट भी कांसेप्ट देई चंदी कैपेबिलिटी एटा को मन रखतेबे कैपेबिलिटी अप्रोच ठीक अछि नेक्स्ट with reference to foreign direct investment in India FDI which one of the following is considered is major characteristic FDI काफी टाइम में डिस्कस करी जो FDI को नहीं की it is the investment through capital instruments essentially in a listed company तो कंपनी रे आपण दी इन्वेस्ट करिवे कैपिटल it largely non-debt creating capital flow. Second, it is the investment which involves debt servicing. Fourth, it is the investment made by the foreign institutional investor in the government securities. देखो तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट तो नुहे FII FDI अलग जिनस ये डेप्ट सर्विसिंग भी नुहे नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो ये जो कुछ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली इन द लिस्टेड कंपनी तमाने केवल जे एसेंशियली से जो लिखी एसेंशियली माने एक्सक्लूसिव आपण कहि परिबे जो लिखी कि एसेंशियली और एक्सक्लूसिवली ऑन द लिस्टेड कंपनी दैट इज इनकरेक्ट तेणु करेक्ट होची गोटिए से होची बी ठीक अछि with reference to international trade of India at present which of the following statements is are correct Which of the following statements is are correct? India's merchandise export are less than its merchandise import. Merchandise export are less than the merchandise import. Obviously, trade deficit हमें थाए इंडिया सबले तेणु करंट अकाउंट डेफिसिट जोटा हमें कहू बेयरली सरप्लस आपन को देखिबा को मिलिबो तमने एक्सपोर्ट इज लेस दैन इंपोर्ट India's import of iron and steel, chemical, fertilizer, machinery have decreased in recent years. Obviously, machinery case रे आपण ते देखिबे एटा डिक्रीज है नाही recent years रे आपण देखिबे that has been increased. तो 2 को आपण इजीली एलिमिनेट एठी करि परिबे 1 करेक्ट अछि हमें देखिले थर्ड को आसन तो इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैज मोर देन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एब्सोल्युटली करेक्ट जेहेतु आईटी बूम हम इंडिया रे देखिबा को मिले सर्विसेज सेक्टर रे हमें अधिक एक्सपोर्ट करूचे इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट दैट इज अगेन करेक्ट सो 1 3 4 आर करेक्ट with reference to trade related investment measures which of the following statement is are correct trade related investment measures quantitative restrictions and imports by foreign investors are prohibited first second se kon कहूची second se कहूची they apply to invest measures related to trade in both goods and services third se कहूची they are not concerned with the regulation of foreign investment correct answer आंसर कौन हम कहूँ
तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ट्रिम ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स एटा आपनकर बेसिकली गुड्स रे आसे नाही ट्रेड जोटा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स सेटा सर्विसेस रे आपनको अधिक देखिबा को मिले जे सर्विसेस रे ही देखिबा को मिले तो सेकंड स्टेटमेंट को आपण इजीली इनकरेक्ट या एलिमिनेट करि परिबे दुईटी बाकी जो दुईटी स्टेटमेंट रहला क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन इंपोर्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड एंड नॉट कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो ये होची करेक्ट वन सी इज द करेक्ट आंसर Which one of the following is not an instrument of selective credit control in India? Selective credit control. Selective credit control कहले कौन ना जमती गोटे अच्छी quantitative आउट क्वालिटेटिव से क्वालिटेटिव ही आपनकर सिलेक्टिव बोली हमें कहूचे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहले पॉइंट देखिबे not an instrument से कहूचे not an instrument of selective credit control regulation of consumer credit rationing of credit marginal requirements ये होची कौन selective credit control और या qualitative credit control variable cash reserve ratio होची quantitative ठीक है so answer is D next consider the following statements with reference to or with respect to non-performing assets. Non-performing asset. All advances where interest or installment of principal remains due more than 90 days is classified as NPA. That is correct. Helps in measuring the performance of a bank. Public sector banks have lower NPA compared to the private sector bank. Rather, public sector bank have more NPAs than the private sector. So this statement is incorrect. So only two answer B. Economic curve and description. Phillips curve, that is relationship between product price and quantity of a product se kuji. Production possibility curve representing curve production trade-off of an economy given fixed resources. Laffer curve shows relationship between rates of taxation. Hypothetical resulting levels of government revenue. Laffer curve correct अछि काहेकि ना taxation आउ government revenue विषय से कहूची प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहले कोटा बुझा जाए ना एई भली भाव रे रिसोर्सेस को आपण केते यूज करि पारुचंदी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ट्रेड ऑफ बिटवीन द फिक्स्ड रिसोर्सेस एंड प्रोडक्शन जोटा में कहूची सेटा होची सेकंड इज करेक्ट फिलिप्स कर्व रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट इज अगेन इनकरेक्ट कारण फिलिप्स कर्व में देखि छे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट भितर रिलेशन एस्टैब्लिश करे ठीक अछि so answer is what 2 and 3 only two pairs are correct next consider the following lowering short term interest rate increasing CRR buying government securities under open market operation reducing statutory liquidity ratio ए भितर कोटा expansionary monetary policy ए भितर कोटा expansionary monetary policy expansionary monetary policy माने कोन हबो lowering short term interest rate ता माने cost of borrowing कम रहइबो people will have more loan or people will go for more borrowing so this is correct increasing CRR obviously this is contractionary buying government securities under open market operation buying government securities means creating more money supply this is correct reducing SLR again this is correct so answer कोन हबो answer होची आपनकर answer होची आपनकर सेकंड को आपण एलिमिनेट करिवे 1 3 4 होची करेक्ट ओनली 3 होची आंसर एक्सपांशनरी नेक्स्ट consider the following statements regarding NPCI National Payment Corporation of India NPCI National Payment Corporation of India it is an initiative of Reserve Bank of India and Indian Bank Association it regulates authorizes payment and settlement system in the country Google Pay is an example of payment system operator in the country National Payment Corporation of India विषय answer करंतु
देखो से जो कुछ रेगुलेट्स, ये रेगुलेट्स वर्ड टा टिके डिफिकल्ट कहीं ना एनपीसीए रेगुलेट करूनी, रेगुलेट काम तो अल्टीमेटली आरबीआई रेगुलेट से करूनी, से डेवलप करूची जेमती यूपीआई को से डेवलप कला, इंटरलिंकिंग से करूची आपनकर पेमेंट सेटलमेंट को, ठीक अछि, बट रेगुलेट से करू नाही, ठीक अछि। बाकी देखो फर्स्ट ठीक अछि एनपीसीआई, थर्ड अच्छी गूगल पे इज एन एग्जांपल ऑफ पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर इन द कंट्री, तो थर्ड इज आल्सो करेक्ट आपण कहि परिबे। तो आंसर आपनकर कोन हबो, आंसर होची आपनकर ओनली 2, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक ऊपर क्वेश्चन अछि, ऑलरेडी हमें मल्टीपल टाइम्स डिस्कस करिचे। स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपोजिट्स नॉट ऑफ लेंडिंग, नॉट ऑफ लेंडिंग नुहे, एटा होची पेमेंट बैंक पाई नॉट ऑफ लेंडिंग। स्मॉल फाइनेंस बैंक दुईटी जाक काम करिवो। द फॉरेन शेयर होल्डिंग इन स्मॉल फाइनेंस बैंक इज नॉट परमिटेड। The small finance bank will be subjected to all prudential norms and regulations by RBI as applicable to existing commercial banks, ठीक है जी। तो obviously third statement is correct, ये जो कुछ foreign shareholding in the small finance bank is not permitted, so it's again wrong, so it's permitted। 1 and 2 को eliminate अपन करि परिबे, only 1 आपनकर आंसर अपन को मिल जिवो, ठीक अछि, ओनली 1 आंसर अपन को मिल जिवो। तो ठीक अछि, तो ये थिला आपनकर 50 अराउंड क्वेश्चन जोटा कि हमें डिस्कस कले। तो आज 50 अराउंड ही क्वेश्चन हमें डिस्कस करूचे, तो नेक्स्ट क्लास रे बाकी 50 क्वेश्चन को हमें डिस्कस करिबा, ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्लास रे आउ 50 क्वेश्चन को हमें डिस्कस करिबा। तो आज पई एठी रखिबा हमें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मो आपन को टेलीग्राम चैनल भी कहिछि, सेठी आपन जॉइन करि परिबे फॉर एवरी डिटेल अपडेट हो, मटेरियल हो, जहाँ भी आपन को दरकार यू कैन जॉइन देयर, ठीक अछि। मो उथरे आपन को से स्लाइड देखि दोछि सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू जॉइन। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दुईटी जगह आपन जॉइन करि परिबे स्कैन करी, लेफ्ट होची टेलीग्राम, एपटा होची इंस्टाग्राम, ओके। क्लास टाइमिंग सेम 11 AM, 11 AM रे ही रेगुलरली आपनकर क्लासेस हो 11 AM, ठीक अछि, थैंक यू।